Morning all. It's 11:10 now, so I think we should start. So prior to the class test, we completed chapter number 3, was link layer. I hope I'm audible. Yes, sir. Okay. So we already completed data link layer. Basically, data link layer has two primary functions. One is to manage the link, that is manage transmission over a link, which includes reliable communication, framing, etc. That functionality is called as link layer, or it is implemented at link layer. There is one more function that the data link layer is responsible for. It is accessing the medium, because we have seen two different situations or two different kinds of links. One was point-to-point link, and other was a point-to-multi-point link or a broadcast link. Okay? Broadcast link can also be called as a point-to-multi-point link. In case of point to multi-point link, it was somewhat like this. Like I'll try to draw a small diagram. There is a computer here, maybe one more here, and few others. Is it? And they're all connected by device like a hub, suppose. We call it as a hub. Try to understand. This is very important. These are some of the computers connected. Here only 3 computers are shown, but practically there can be hundreds or thousands of computers connected to the interconnecting device like hub. We all know that whenever a packet is sent from, suppose, this machine number 1, the packet is received by hub. It is copied onto rest of the channels, is it? Rest of the ports. Assuming that the complete network is a hub network, all the lines will be carrying my packet or the packet sent by this computer. Do you all agree that if I send a packet, all the links will be carrying this packet only? What if some other computer tries to transmit a packet at the same time while this link was carrying a packet? Yes. Suppose this computer transmits, the packet will travel like this. It will collide over this link. Basically, both the packets will collide with each other, resulting into a garbage signal. Is it? And like this, you can see that if any one computer is transmitting a packet, it will be traveling over all possible links in the network. It means at a time only one station can transmit or one computer can transmit. If more than one computer transmits at the same time, it results in collision of the packet. Is it? Collision मतलब आप सबको पता है in general in English. Collision means accident होना, दो गाड़ियों का collision हुआ. That way it is. ठीक है? तो collision का result क्या होता है? Everybody understands. Exactly here also, if collision occurs between two packets, both the packets will be garbled. In the sense, you will not be able to interpret bits transmitted by any of the packets. Okay? This is collision. So what do you think? Which layer should be responsible for ensuring that at a time only one station transmits over the shared medium? This medium is called a shared. You can see that all the computers are sharing the same medium. In case of point-to-point link, suppose this is a computer, this is one more computer, both of them are connected by means of a point-to-point link, and we already seen with SONET, it's a point-to-point link. Then we can have a serial link, which connects two routers. There also it is a point-to-point link. Here we don't need to worry much about that only one computer is transmitting. दो transmit करेंगे तो भी problem नहीं होगा. Given that it is a full duplex link, both the sides can transmit simultaneously. Okay, without leading to any kind of collision. So here, that function is not required. Controlling that only one station transmits at the same time is not required. And that function is called as medium access control. Medium access control in the sense, who will access the medium?
Access in the sense you are transmitting over a medium, over a channel, it means you are accessing the channel. So medium access control. So basically our objective is to ensure that at a time only one station transmits. In turn, we are controlling who will access the medium at what time. Is this fine? The objective of medium access control. Yes, sir. And it's a huge chapter. So number of slides, I suppose more than 115 or so number of slides. And it is, I believe that it is one of the most important chapter of computer network. ठीक है, सबसे ज्यादा important दो chapter. One is MAC layer. It is important for all LANs. कोई भी LAN ले लो, LAN is actually controlled by MAC protocol. Like Ethernet. Suppose we call that we have a wired LAN called as Ethernet. Ethernet is 802.3 protocol. कौन से layer का protocol? It is a MAC protocol. Wireless LAN 802.11. हम लोग बोलते हैं ना वाईफाई या 802.11. 802.11 is a MAC protocol. So each and every LAN is standardized by MAC protocol, or MAC protocol controls the operation of any LAN. So अगर आपको कोई भी LAN समझना है, you need to be very clear with medium access control. ठीक है? If you wish to understand network in general, that is internet and how the things works in the in internet or in the broader network, then network layer is important. Is it? So these are the two layers which you should understand very well. डेटा लिंक लेयर ठीक है, आपने एक बार कर लिया, वो सारे नेटवर्क के लिए सेम ही होता है. बट नेटवर्क लेयर will be different for different networks. MAC layer will be different for different networks or different LANs. ठीक है? And that is why this two layer becomes very important. I hope the objective of studying this layer is clear. So data link layer is responsible for two parts. Upper part is called as LLC, link logical link control. It is responsible for link management, whatever we have studied in previous chapter. And lower part of data link layer is called as MAC, medium access control, something which we are going to study now in this chapter. This is called as a sub layer of data link layer. So you can see that MAC layer is a sub part or a lower part of data link layer, and that is why it is called as sub layer. MAC layer normally नहीं बोलते, MAC sub layer बोलते, ठीक है? But if at any point of time, if I say MAC layer, then also you should understand that it is part of data link layer only. It is not a dedicated layer. Okay? So whenever I say MAC layer, it is actually data link layer. So in some of the cases, it is shown as two different layers, but otherwise I can say that this is my data link layer, which takes care of both the functions, link management as well as medium access control. Okay? So under this chapter, these are the primary topics which you are going to study. Channel allocation problem, something that I already explained. What are the problems that we need to take care of while allocating a channel? Allocating a channel means a computer wants to transmit, but वो अपनी मनमर्जी से चाहे तब transmit नहीं कर सकता. Is it? Because the medium is shared, we need to ensure that at a time only one station transmits. If this is the case, then probably some other station is transmitting, and that is why I am supposed to wait. Is it? So this problem is called as channel allocation problem. कौन से तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं? ठीक है? Some of the methods you already know. We shall see those methods in the next slide. So channel allocation problem, multiple access protocols, यानी कि MAC protocols. What are the different categories of MAC protocols which we are going to study? Then we'll be taking examples of Ethernet. So we'll be studying Ethernet in detail. Followed by that, we'll be talking about wireless LAN in detail. This is your wired MAC. This is wireless MAC. So these are two different categories of MAC protocols which you are going to study. 802.3 here and 802.11 here. ठीक है? और आपके सिलेबस में जितना है उससे ज़्यादा कवर करने वाले हम लोग in wireless LAN. The slides that I'll be using for wireless LAN, it is not from this book. इस बुक में wireless LAN बहुत ही brief में दिया है. I'll be using a different book और उसकी slide use करने वाला हूँ so that you can have better understanding of wireless LAN. These are some of the examples, some of the other example MAC protocols, broadband wireless, Bluetooth and RFID. We are not going to cover these topics because this does not suit well in computer network course. These are basically part of wireless network or mobile
communication course. Okay, so this we are not going to touch upon, but those who are interested in this topic, there is a course आपको already बताया था मैंने, IoT. So in IoT course, these topics are covered. It is a elective. So elective may will be talking about Bluetooth, RFID, and many other technologies. Then we'll be looking at data link layer switching, and there are many algorithms under switching. So we'll be talking about all those algorithms. Followed by that, we'll be talking about VLAN, that is virtual LAN. ठीक है, और आपका जैसे ही लैब में प्रैक्टिकल नंबर 4 खत्म होगा, उसके बाद आई सपोज आई विल गो टू VLAN कॉन्फ़िगरेशन इन पैकेट ट्रेसर. ठीक है, दिस इज वेयर योर रियल नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन विल स्टार्ट. ठीक है, इन लैब नंबर 5 इज VLAN. So these are the topics which I plan to cover in this chapter. So look at MAC sublayer. We already seen the protocol stack, the hybrid protocol stack, which has been followed in this book: application, transport, network, data link, and physical. Right now we are into data link layer, and we have already justified that there are two parts. Right now we are into this part. MAC is also here, is it? It is part of data link layer. It is responsible for deciding who sends next on a multi-access link. Multi-access means shared link, a link which is shared between multiple stations. Many stations can transmit a frame on that link, is it? So we are supposed to decide who will transmit next. What are the simplest possible algorithms that you can think of? Yeah, I expect the answer from you. What are the simplest possible algorithms that you can think of? ये आपने ऑलरेडी पढ़े हो, कुछ एल्गोरिथम आपने डेटा कम्युनिकेशन सब्जेक्ट में पढ़े हुए, और अगर वो याद नहीं आते तो आपको लगता क्या है कि सपोज आपके क्लास में देयर आर 70 स्टूडेंट्स. इफ आई आस्क दैट एवरी 70 स्टूडेंट्स हैज टू आस्क द क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ शेड्यूलिंग सो दैट टू स्टूडेंट्स डज नॉट आस्क क्वेश्चन साइमल्टेनियसली? क्या क्या कर सकते हैं? आर वी कनेक्टेड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, exactly. Round robin, it is one possibility. That roll number wise करते हैं हम लोग. Roll number 1, then 2, then 3. First come, first serve. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी कर सकते हैं. चलो सबको बोलता हूँ, एक बजर है आपके टेबल पे, उसको दबाओ, जो सबसे पहले दबाएगा उसकी बारी है. इट इज़ लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. अगर मैं स्टैटिक शेड्यूल करता हूँ रोल नंबर वाइज, तो आई कैन कॉल इट एज राउंड रॉबिन. बट दिस आर पॉसिबल algorithms, is it? This may not be like efficient in all the kind of network, but still these are possible algorithms, is it? So responsible for deciding who sends next can be decided by using a algorithm like round robin, can be first come first serve, is it? And likewise, there are so many algorithms, but these are two of the naive approaches that we can use. It is an important part of link layer, especially for LANs. आपको थोड़ी देर पहले जैसे मैंने बताया था कि कोई भी LAN प्रोटोकॉल हो, it is controlled by, or the operation of a LAN is controlled by MAC protocol. Like Bluetooth हम लोग बोलते हैं, Bluetooth is a kind of network, is it? But उसका जो प्रोटोकॉल है वो MAC layer प्रोटोकॉल है. Wireless LAN MAC layer protocol, Ethernet MAC layer protocol, and likewise. So you can understand that each and every LAN, it is standardized or it is controlled by the MAC protocol. Okay, so MAC is very important for anybody who wants to understand LANs, how exactly a LAN works. Look at the channel allocation problem. Why it is a problem? First of all, because the medium is shared. At a time, only one station can transmit. Multiple stations attempting to transmit will result into collision. Okay. For fixed channel and traffic from end users, given that we've got a fixed channel, suppose this is the channel where this is some kind of interconnecting device and multiple channels are connected to it, and we have so many stations. Suppose we have n stations connected to this channel. ठीक है, चैनल मतलब हमेशा याद रखो एक वायर नहीं होता कि जिसके हमेशा दो ही एंड पॉइंट होंगे. दिस आर ऑल चैनल्स, इज इट? बीच में एक हब लगा दो तो आई कैन हैव हंड्रेड्स ऑफ चैनल्स कनेक्टेड. इन टर्न दिस इज अ सिंगल चैनल. ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ LAN segments are connected, it becomes a single channel. So for fixed channel and traffic coming from end users, can I use techniques like ये FDM होना चाहिए, not FTM. ठीक है, so divide the bandwidth using FDM.
इसके अंदर में n यूजर है, तो मैं मेरी पूरी इस चैनल के बैंडविड्थ को n पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, हर एक यूजर को एक सेक्शन दे देता हूँ, लेट देम ट्रांसमिट साइमल्टेनियसली, विल वर्क? डू यू थिंक इट विल वर्क? एफडीएम क्या था? फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। और एफडीएमए वो क्या है? फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। Multiple access is the objective, is it? We want to ensure that multiple station access the medium. Simultaneously नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि आपने पूरी चैनल उस यूजर को दे रखी, तो एट अ टाइम एक ही यूजर ट्रांसमिट कर सकता है. बट इफ आई डिवाइड द चैनल इनटू 4 पार्ट्स एंड लेट 4 यूजर ट्रांसमिट साइमल्टेनियसली, इज इट नॉट पॉसिबल? लाइक एफएम फॉर एग्जांपल, 7 चैनल अभी चल रही है, अपने अपनी कार में सुनते होंगे आप, या अपने मोबाइल में सुनते होंगे. पैरेलली कैन आई हैव 7 डिफरेंट चैनल्स? 7 different channels are transmitting. Depending upon your requirement, the receiver can tune itself. But सातों सात चैनल के सिग्नल एक साथ जा रहे हैं, then also they are not interfering. Is it? What kind of Yes, sir. technique is this? This is a kind of frequency division. क्योंकि सबके frequency अलग अलग कर दिए मैंने. Exactly that way. Is it possible to divide that complete channel into n frequency bands and assign different frequency band to different users? They all will be able to transmit simultaneously without interfering with each other. Why? Because their frequencies are different. This is called as frequency division multiplexing. Time division multiplexing, complete channel bandwidth is assigned to any station at any given point of time. But ये पहला स्लॉट आपका है कि 1 माइक्रोसेकंड तक आप भेजो, नेक्स्ट माइक्रोसेकंड मैं भेजूंगा, उसके बाद की माइक्रोसेकंड सम अदर सेशन विल ट्रांसमिट इन लाइकवाइज. So now you can see that the channel is divided based on the time. सेम टाइम पे 2 यूजर नहीं, बट एट डिफरेंट टाइम्स वी कैन हैव डिफरेंट यूजर्स ट्रांसमिटिंग. देन वी कैन हैव कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, सीडीए में. उसमें फ्रीक्वेंसी भी डिवाइड नहीं होती, टाइम भी डिवाइड नहीं होती. सेम फ्रीक्वेंसी पे सेम टाइम पे मल्टीपल स्टेशंस कैन ट्रांसमिट बट यूजिंग डिफरेंट कोड्स. ठीक है? एंड देयर ट्रांसमिशन विल बी मर्ज्ड, and because they were all using different codes, receiver will be able to extract out the signal transmitted by a specific station by using that station's code. So पहले वाले में फ्रीक्वेंसी से हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे थे, दूसरे वाले में टाइम से हम लोग अलग कर रहे थे, तीसरे वाले में कोड से अलग कर रहे सिग्नल्स को. ठीक है? So this is how we can permit multiple stations to transmit, maybe at same time, maybe at different times. Is it? Depending upon whether it is FDM, TDM or CDM. This is static allocation. Static allocation like FDM. मैंने n frequency बनाई, n station को assign कर दी अलग अलग frequency. But what if some of the stations are sitting idle most of the time? Can I say that I'm efficiently using the channel? No. Out of n channels, suppose half of the users are not transmitting continuously. उनकी bursty traffic है. Bursty in the sense, at some point of time they will transmit huge amount of data. Once it is transmitted, then they will sit idle for maybe next 5-10 minutes. Once again, they will transmit a huge burst of data. Once again, be silent for some time. This kind of traffic transmission or this kind of traffic pattern is called as bursting. इसका graph अगर आप plot करो, that will be like this. There is a spike, then there is a straight line. Once again a spike, then there is a straight line. ठीक है? Are you getting it? So the users who are not transmitting, even after the frequency band is allocated to them, that frequency band is actually getting vested. So static allocation means this is the problem always. Similarly, time division multiplexing, suppose ये आपके 4 slot है, पहला slot first user को दिया, दूसरा, तीसरा, चौथे user को दिया. First user is transmitting, ठीक है? Second does not have anything to transmit, so you need to wait. But why? Because no other station can transmit here. It is reserved for station 2 only. Station 3 has some data to transmit, so will transmit. Station 4 again does not have anything. So basically you can see that 50% of the slots are actually being used. Rest of the 50% are not being used or underutilized. Are you getting it? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this is the problem with static allocation. FM radio, like suppose 7 चैनल है, हमने 7 ही चैनल पॉसिबल थी, सपोज फ्रीक्वेंसी के हिसाब से डिवाइड कर दिया हमने, 7 अलग अलग ट्रांसमीटर को एक एक चैनल असाइन कर दी. यू ट्रांसमिट योर कंटेंट्स ऑन दिस चैनल एंड लाइकवाइज.
What if one of the station does not transmit anything? Basically, we are wasting that capacity, is it? There were maybe 10 or 15 different transmitters who were ready to transmit. उसमें से हमने 7 को allocate की. अगर उसमें से after allocation one of the station does not transmit, it means we are wasting the bandwidth. ठीक है? That is the problem with static allocation. So static allocation performs poorly for bursty traffic, as I mentioned. Allocation to a user will sometimes go unused if you do not have anything to transmit. Basically, the capacity which is reserved for you is wasted. Okay, that is the problem with static channel allocation. So the solution is to allocate the channel dynamically. But आपको जरूरत है तब आपको चैनल मिलेगी, आपको जरूरत नहीं है तो कोई और उस स्लॉट को या उस चैनल को या उस फ्रीक्वेंसी को यूज कर लेगा. But our objective is to ensure that the channel utilization increases. At the same time, overhead because of controlling the channel, because dynamic है तो आपको कोई ना कोई algorithm रखना पड़ेगा. Is it? Some algorithm which coordinates this process of allocating a channel. Dynamically करना तो इतना आसान तो नहीं होगा जितना static में. ठीक है? So उस algorithm का overhead should be minimal. Efficiency of the utilization or the channel utilization should be maximum. That is the objective. ठीक है? Dynamic allocation gives the channel to a user when they need it. Potentially, it is n times as efficient for end user compared to maybe a worst case static allocation से ये n times ज़्यादा better हो सकता है. Worst case से, is it? Best case में तो आप बोल सकते हो कि static allocation है n user को दिया और n के n transmit कर रहे, ये रहा 100% utilization. In that case, dynamic can never compete with it. Because dynamic में there will be some overhead because of the coordination. Is it? आपको coordinate तो करना पड़ेगा ना, चलो अब तुम्हारी बारी, ये चीज करने के लिए भी आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा. And because of that time, we are wasting the channel utilization or channel capacity. So dynamic cannot compete with static in that case. We are assuming average case. अगर आप average case लो, तो dynamic performs better than the static allocation. ठीक है? There are many schemes. Dynamic allocation schemes. Schemes means protocol. Dynamic allocation protocol available in the literature, but they all vary based on different assumptions. Assumptions in the sense, the kind of environment for which they are designed. जैसे हमने डेटा लिंक लेयर में भी एनवायरनमेंट लिया था, 6 के 6 प्रोटोकॉल का एनवायरनमेंट अलग अलग था, उसके हिसाब से देयर वर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स. Exactly here also, the kind of environment in which a MAC protocol works, उसके हिसाब से we can have different MAC protocols. So have a look at some set of assumptions, is it? And we'll be starting with a protocol which is very simple, given that the assumptions are very hard, is it? उसके बाद we'll keep on relaxing the assumption and likewise. So look at some set of assumptions. We'll be looking at 5 different assumptions here. और उसके implications क्या होते हैं? Like the first one is independent traffic. If I say that there are n users who are trying to transmit, at the same time we are assuming that all n users are independent of each other. Like सब सारे के सारे n user, they are generating traffic. Generating traffic in the sense they are sending packets. And those packet transmission is independent of each other. ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे सब एक साथ भेज दिया, then सबने synchronous नहीं बोला चलो अब सब चुपचाप बैठ जाओ. ये इंडिपेंडेंट नहीं है, is it? क्योंकि सबको कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है. यहाँ वैसा नहीं. We are assuming that the traffic is independent. So कोई भी स्टेशन कभी भी ट्रांसमिट कर सकता है without worrying about what other station is doing, is it? Then only we can say that they are independent. Often not a good model, but it permits the analysis. क्योंकि practically हर नेटवर्क में इंडिपेंडेंट ट्रैफिक होना जरूरी नहीं है. There will be some kind of dependence. There might be, like for example, suppose I got a sensor network. In this classroom, suppose I've deployed 7 sensors to monitor the temperature of this room. Okay, so these are 7 different stations. They do not transmit anything if the temperature is less than 30. और सपोज टेम्परेचर सेंसर से अच्छा मैं रखता हूँ फायर सेंसर. ठीक है, ये ज्यादा अच्छा एग्जांपल है. आई गॉट फायर सेंसर्स बीइंग डिप्लॉयड इन दिस बिल्डिंग. दे वोंट बी ट्रांसमिटिंग एनीथिंग. जब तक कि फायर डिटेक्ट नहीं होता, दे विल नॉट बी ट्रांसमिटिंग एनीथिंग.
Why? Because they are not supposed to report. They are supposed to report fire related events. फायर डिटेक्ट हुई तो कंट्रोलर को वो मैसेज भेजो कि देयर इज फायर इन दिस बिल्डिंग. ठीक है. जब आग लगती है तब सारे के सारे स्टेशन या सारे के सारे सेंसर एक साथ ट्रांसमिट करेंगे. कैन आई से दैट दे आर इंडिपेंडेंट? नहीं, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट नाउ. इज इट? सो इंडिपेंडेंट ट्रैफिक, ठीक है, वी कैन टेक दिस अजम्पशन, बट इट मे नॉट बी द केस ऑल द टाइम. देयर माइट बी सम डिपेंडेंसी. दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं या तो सब एक साथ एक इवेंट के थ्रू इन सिंक ट्रांसमिट कर रहे हैं. इज इट? सो दिस इज पॉसिबल विद क्वाइट few types of network. Next assumption is single channel. So ये assumption तो हमें रखना ही है. So we have only one channel for data transmission. No other alternate channel is available for any kind of communication. So no external way to coordinate between the senders. दो सेंडर ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो कोई और एक चैनल रखो जिसपे बोल दे कि हाँ भैया मैं ट्रांसमिट कर रहा हूँ, तुम मत भेजो. उस टाइप का चैनल नहीं है. सो ऑन द सेम चैनल आपको कोऑर्डिनेशन पैकेट अगर कुछ भेजना है तो वो भी इसी चैनल पे जाए. ठीक है. सो वी हैव अ सिंगल चैनल अवेलेबल ओवर विच ऑल योर कंट्रोल ट्रैफिक एंड डेटा ट्रैफिक ट्रेवल्स. यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज कंट्रोल ट्रैफिक एंड व्हाट इज डेटा ट्रैफिक? थोड़ा सा भी अंदाजा है या डू यू एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन? यस, if you expect something, let me know, I can explain. Sir, some explanation would be good, I think. Okay. Like suppose एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग. दो स्टेशन है, ठीक है, दोनों का कोई ना कोई एड्रेस है, मैक एड्रेस होगा. एंड वी अज्यूम दैट, नॉट अज्यूम, इट इज अ फैक्ट दैट मैक एड्रेस ऑफ एवरी स्टेशन विल बी यूनिक ग्लोबली. सपोज इसका मैक एड्रेस है 1, इसका है 2, सम नंबर. ठीक है. एक्चुअली बहुत बड़ा होता है बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी आर टेकिंग इट एज 1 and 2. Suppose if I say that the algorithm is lower number station will win and will transmit. If multiple stations are ready, lower number station will win the race and will transmit. So I say that there are two channels existing. One channel is data channel जिसकी bandwidth बहुत ज़्यादा है, जिसके ऊपर आपके डेटा पैकेट ट्रांसमिट होंगे. और दूसरी चैनल है जो कंट्रोल चैनल, इसकी बैंडविड्थ बहुत ही कम होगी. इज इट फ्यू बिट्स पर सेकेंड और मे बी किलो बिट्स पर सेकेंड इज मोर देन सफिशिएंट फॉर अ कंट्रोल चैनल. इस कंट्रोल चैनल पे ये दोनों आपस में बात करेंगे कि तेरा एड्रेस दे, मैं तो मैं मेरा एड्रेस दे रहा हूँ. ये बोलेगा मेरा एड्रेस 1 है, ये बोलेगा मेरा एड्रेस 2 है. तो दोनों को पता चल जाएगा ओके देयर इज somebody with a smaller address than me. So 2 will give up the transmission. 1 will get okay, all the stations have bigger address than me. इसका मतलब I can transmit. So it will use the data channel and transmit the packet. But control channel might be used to exchange the addresses, suppose. Are you getting it? This is a control channel. Yes, sir. There are networks which might have a dedicated control channel and a dedicated data channel. ठीक है. कंट्रोल चैनल पे आपका डेटा नहीं जाएगा, डेटा चैनल पे आपका कंट्रोल नहीं जाएगा. बट द अजम्पशन दैट वी आर टेकिंग हियर इज अ सिंगल चैनल. वी डू नॉट हैव टू सेपरेट चैनल लाइक दिस. सो आपको डेटा भेजना है, कंट्रोल पैकेट भेजना है, जो भी करना है, डू इट ऑन द सेम चैनल. सो इफ आई डू नॉट हैव दिस, देन दिस एंड दिस विल कम्युनिकेट ओवर द सेम चैनल. इसी डेटा चैनल पे अपना एड्रेस भी एक्सचेंज करेंगे. एड्रेस एक्सचेंज होने के बाद जो जीतेगा वो ट्रांसमिट करेगा ऑन द सेम चैनल. ठीक है. What are the advantages of having a dedicated control channel? By the time a data packet exchange is happening, we can exchange the packets over control channel and prepare the next station. समझ में आ रहा है? पैरेलली हो सकता है. नेक्स्ट कौन भेजेगा वो मैं कंट्रोल चैनल पे एक्सचेंज करके आइडेंटिफाई कर सकती हूँ. यहाँ नहीं कर सकती. यहाँ एक डेटा पैकेट जा रहा है, सो आई नीड टू वेट टिल दैट डेटा पैकेट इज ओवर. I cannot do anything else. Once the data transmission is over, then I can start exchange of control packets to identify who will transmit the next packet. ठीक है. बट उसके लिए आपका डेटा चैनल वेस्ट होगा. इज इट? यहाँ नहीं होगा. सो एवरी नेटवर्क हैज इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स. ठीक है. सो सिंगल चैनल असम्पशन. नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेबल कोलिजन्स. अगर कोलिजन होता है, लाइक सपोज दिस इज अ सेट ऑफ स्टेशंस,
both of them transmit simultaneously. इसने इसको भेजा, इसने इसको भेजा. Suppose there is a third station also, ये भी भेज रहा है. Is it any time two station transmit simultaneously, it will result into collision. एक बिजली कड़केगी यहाँ पर. Is it? Because collision हो चुका है. And every station will be able to detect that collision has happened. तीनों स्टेशन को पता चल जाएगा कि जिसने भी भेजा था पैकेट उसका कोलिजन हुआ है. Is it? This is called as observable collisions. यानी कि stations are able to detect collision. So मैं दो assumption ले सकता हूँ. पहला assumption ये है कि collision detection is not possible. आपने पैकेट भेजा, कोलाइड हुआ, तो भी आपको पता नहीं चलेगा कि कोलिजन हुआ है. ठीक है. It means I can say that I do not have collision detection capability. The other assumption is that the collisions are getting detected. और जितने भी स्टेशन है सबको पता चलेगा कि कोलिजन हुआ है. So stations can detect collision, stations cannot detect collision. These are two assumptions. So we will take either of it. कि ये प्रोटोकॉल में कोलिजन डिटेक्शन पॉसिबल है, ये प्रोटोकॉल में कोलिजन डिटेक्शन पॉसिबल नहीं है, एंड लाइकवाइज. ठीक है. सो कोलिजन्स, इट कैन बी डिटेक्टेड, इट मे नॉट बी डिटेक्टेड. ठीक है. mechanisms vary because of this. Detection is possible or detection is not possible. ठीक है. नेक्स्ट, कंटिन्यूस टाइम और स्लॉटेड टाइम. कंटिन्यूस टाइम मतलब आपने एक फ्रेम भेजी, जब भी आप रेडी हो यू सेंड अ फ्रेम. सपोज दिस इज योर फ्रेम, ट्रांसमिटेड. द सेकेंड स्टेशन बिकम्स रेडी एट दिस पॉइंट, तो वो भी ट्रांसमिट कर देगा. वाई? बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी स्लॉट्स और वी डू नॉट हैव एनी फ्रेम बाउंड्री. जिसको जब भी भेजना है भेज सकते. दिस इज कॉल्ड एज कंटिन्यूस टाइम assumption. ठीक है. द अदर टाइम assumption इज कॉल्ड एज स्लॉटेड टाइम. स्लॉटेड टाइम इन द सेंस ये आपका टाइम लाइन है, उसको मैंने स्लॉट्स में डिवाइड कर रखा है. दिस आर स्लॉट्स. ठीक है. एंड दिस आर स्लॉट बाउंड्रीज. ये स्लॉट स्टार्ट हो रहा है, यानी कि जिस स्टेशन को ट्रांसमिट करना है तो इसी पॉइंट पे स्टार्ट कर सकता है. इफ अ स्टेशन हैज मिस्ड दिस पॉइंट देन इट हैज टू वेट फॉर नेक्स्ट स्लॉट बाउंड्री. बट अ फ्रेम cannot start at any arbitrary time. ठीक है. A frame transmission has to start at slot boundary. ठीक है. सो अगर आपने टाइम को स्लॉट्स में डिवाइड कर रखा है then that system is called a slotted system. अगर टाइम में डिवाइड नहीं किया, स्लॉट में डिवाइड नहीं किया टाइम को, कंटिन्यूस है, इसका मतलब देयर इज नो नथिंग शेड्यूल्ड, कोई भी कभी भी भेज सकता है, then it is called as continuous time assumption. Is this fine? Slotting will be better. ठीक है. We shall justify this in the next 1 or 2 slides. But slotting would be better, ठीक है, compared to continuous time. Last assumption is career sense. Career sense. चलो मैं आपको बोल रहा हूँ कि सब लोग क्वेश्चन पूछो एक एक करके. ठीक है. If one of the students start asking a question, suppose roll number 10 is asking question, do you think you will ask a question simultaneously? Yes or no? कोई और ऑलरेडी बात कर रहा है तो आप बात करेंगे या नहीं करेंगे? नो सर. No, sir. क्यों? क्योंकि आप सुन पा रहे हैं कि किसी और की आवाज आ रही है, इसका मतलब सम ट्रांसमिशन इज हैपनिंग. इज इट? करियर सेंस का मतलब यही है, सुनो. लाइक आई विल एक्सप्लेन. सपोज देयर आर 3 stations connected by a hub. These are 3 stations. A is sending to B. ये A है. This is B. And the third station is suppose C. This is how it is connected. A is sending to B. तो hub के पास जाएगा. What hub will do? It will copy the packet on all links. So, do you think that C का transceiver यानी कि LAN card of C will be able to detect some signal on it? आपको लग रहा है कि आपका LAN कार्ड उस सिग्नल को डिटेक्ट करेगा जो A B को भेज रहा है? Something is traveling from A to B. Do you think that transceiver of C will be able to detect that there is some activity in the network? सिग्नल तो आ रहा है C के पास. आपने वायर शार्क में किया ही है ना. वायर शार्क में मैंने आपको बताया भी था. अगर आपका हब नेटवर्क है, आपका दोस्त अगर गूगल पे कुछ कर रहा है तो सिटिंग बिसाइड्स योर फ्रेंड यू विल बी एबल टू कैप्चर हिज ट्रैफिक. द ट्रैफिक इज नॉट मेंट फॉर यू, देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू कैप्चर. क्यों? क्योंकि हब से कनेक्टेड है. तो यहाँ पर भी वही हो रहा है. आपका फ्रेंड है, वो गूगल से बात कर रहा है, देन ऑल्सो सिटिंग हियर स्टार्टिंग वायर शार्क यू विल बी एबल टू कैप्चर पैकेट्स.
इसका मतलब पैकेट आपके लैन कार्ड पे आ रहा है। अगर आपके लैन कार्ड पे आ रहे हैं तो आप ऐसे सुन सकते हैं उसको, या सम एक्टिविटीज हैपनिंग, अभी भी वही होता है। सपोज आई एम टॉकिंग टू रोल नंबर 10, देन ऑल्सो द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल नॉट इंटरफेयर। मैंने आपको एड्रेस नहीं किया है, रोल नंबर 10 को एड्रेस करके कुछ बोल रहा हूँ, देन ऑल्सो यू विल अंडरस्टैंड दैट समथिंग इज हैपनिंग एंड आई शुड नॉट इंटरफियर विद दैट समथिंग, इज इट? दिस इज कॉल्ड एज करियर सेंसिंग। सेंस द मीडियम, सेंस मतलब सुनो, ठीक है, चेक करो मीडियम पे कोई एक्टिविटी है या नहीं। अगर कोई और ट्रांसमिशन चल रहा है तो यू विल बी एबल टू डिटेक्ट दैट ट्रांसमिशन ऑन योर लैंड कार्ड। आपके लैंड कार्ड को अगर कुछ एक्टिविटी सुनाई दे रही है, इसका मतलब यू शुड नॉट ट्रांसमिट, अदरवाइज you will interfere with the existing transmission. If no one else is transmitting, the medium is idle, the medium is free, you can transmit your packet. Like आपको क्वेश्चन पूछना है और मैं अगर कुछ नहीं बोल रहा हूँ, none of the other student is asking, you are free to ask. ठीक है? Why? Because you could hear that no activity is happening. कोई बात नहीं कर रहा है, so you can talk. Then only उसका कोई मीनिंग बनेगा। अदरवाइज दो लोग ऑलरेडी बात कर रहे हैं, आप तीसरे फिर से बीच में बोलना चालू करो या बीच में क्वेश्चन पूछना चालू करो, बेसिकली इट विल लीड टू collision of all the voices, and effectively nobody will be able to receive anything out of those multiple users. Is this fine? Career sense means the ability to sense the medium. वो हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है? Some of the system career sensing may not be available. In some of the systems, career sensing is available, and accordingly, we will try to design our own protocol. Is this fine with these assumptions? All the 5 assumptions? Yeah. Yes, sir. Okay. So the first protocol is, okay, multiple access protocol, and these are the protocols that we are going to talk about. We'll be talking about Aloha as the first protocol. Followed by that, we'll be looking at several variants of CSM. Okay. Then we'll be talking about collision-free protocols, limited contention protocol, and then we'll be talking about wireless LAN protocols. Is it under MAC? So we'll start with Aloha. Aloha is the simplest possible protocol that one can have. It is as good as no protocol. कुछ नहीं करता. Like suppose अगर मैं इस क्लास में Aloha स्टार्ट कर दूँ, Aloha protocol, इसका क्या मतलब है कि जिसको जब भी क्वेश्चन पूछना है पूछो. Don't worry about whether I am speaking, whether somebody else is asking question. Don't worry. आपको पूछना है पूछो. अगर कोई और नहीं पूछ रहा उस टाइम पे तो आपका क्वेश्चन आएगा मेरे पास. Basically your question will be received and I'll answer it. यानी कि your transmission is successful. अगर कोई और उस टाइम पे क्वेश्चन पूछ रहा है तो it will collide and आपका क्वेश्चन भी जाएगा, उसका भी क्वेश्चन जाएगा. Then you retransmit that question. यानी कि फिर से पूछो. Once again, hoping that this time it is successful. So it is purely based on hope. That is what is Aloha. ठीक है? Aloha के दो वेरिएंट है, प्योर Aloha एंड स्लॉटेड Aloha. Right now we are talking about pure Aloha. ठीक है? So in pure Aloha, user transmits frame whenever they have data. So आपके पास डेटा है तो ट्रांसमिट कर दो. Don't worry about any other user. So इसमें स्लॉटेड टाइम नहीं है, कोलिजन डिटेक्शन नहीं है, career sensing nahi hai. So try to visualize the system in which Aloha is working. Career sensing nahi hai, iska matlab aap sun nahi rahe, koi aur transmit kar raha hai, hone do, main transmit karunga, agar collision nahi hua to success hoga. ठीक है? So no career sensing is available, no collision detection is available in case of Aloha, and no slotted time in case of pure Aloha. It is continuous time assumption. ठीक है? बाकी दोनों assumption, shared channel, so single channel वो अभी भी है, एंड इंडिपेंडेंट ट्रैफिक वो भी है. ठीक है? वो दोनों तो ऑलमोस्ट हर एक प्रोटोकॉल में होगा. सो द वेरिएबिलिटी विल बी between the last 3 assumptions. So in pure Aloha, user transmits frame whenever they have data. User retry after random time for collisions. अगर collision हुआ तो आपको acknowledgement नहीं आएगी. Collision detection नहीं हो रहा है, but lack of acknowledgement means collision. क्योंकि सामने वाले पार्टी को अगर collision वाला पैकेट मिला, इसका मतलब the packet will be corrupted. Surely 100% corruption होगा उस पैकेट में, and other side will not send acknowledgement. ठीक है? So lack of acknowledgement will lead to the assumption that the packet has failed.
that I'm supposed to retry or retransmit that packet. Okay, so users retry after random time for collisions. Okay, it is efficient and low delay under low load. Why somebody can say that Aloha is efficient? It is efficient because there is no overhead. Where is the overhead? Do we have any kind of overhead while using Aloha? Yeah. कोई भी टाइप का मैं कंट्रोल मैकेनिज्म रन कर रहा हूं यहाँ पर. ओके, तुम मत भेजो, मैं भेजूंगा, मैं नहीं भेजूंगा, वो भेजेगा. नहीं, we do not have anything like this. The simple algorithm is that if your data transmit, bas, that's the algorithm. Where is the control overhead? It is not there. Are you getting it? And that is why it can be an efficient algorithm at lower load. Lower load इसका मतलब कि ट्रैफिक बहुत ही कम है आपके नेटवर्क. 1000 स्टेशन है आपके नेटवर्क में. 1000 में से at any given point of time only one station is ready on an average. Assume that on an average only one station is ready out of 1000 at any given point of time. Don't you think that Aloha will be the best protocol? एक ही स्टेशन रेडी है तो उसको ट्रांसमिट करने दो ऑन एन एवरेज. ठीक है, एवरेज केस की बात कर रहा हूँ. प्रैक्टिकली ये कभी नहीं होता. But on an average, if only one station is ready, if that station is permitted to transmit immediately, we can hope that the chances of success is very high. क्यों? क्योंकि और कोई यूजर रेडी नहीं था उस टाइम. Are you getting it? Yes, sir. So that is why Aloha is efficient. और इसका डिले कम है. डिले कम क्यों है? बिकॉज वी आर नॉट डिलेइंग द पैकेट एट ऑल. जैसे ही आप रेडी हो इमीडिएटली ट्रांसमिट. बट अगर दूसरा कोई प्रोटोकॉल होता, वो बोलता रुक जाओ भैया, मुझे चेक करना पड़ेगा, कैन यू ट्रांसमिट और नॉट. I need to check several things before I can permit you to transmit. So don't you think that the packet will be delayed during this time? So Aloha में delay is very less at lower load. ठीक है, at lower load it is a highly efficient protocol. So look at the way Aloha works. Look at the diagram given below. You can see these are all different users, A, B, C, D, E. ये जो आपने बनाया ये ब्लॉक, इट मीन्स इट इज अ फ्रेम विच इज बीइंग ट्रांसमिटेड बाय ए. और ये आपका कॉमन मीडियम है. दिस इज अ सिंगल मीडियम. ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी या कोई डिवाइड नहीं किया, याद रखो. दिस इज जस्ट टू शो दैट पैरेलल ट्रांसमिशंस आर हैपनिंग. सो लुक, ई ने एक पैकेट भेजा. यू कैन सी दैट ये पैकेट स्टार्ट यहाँ हुआ एंड द पैकेट और द फ्रेम ट्रांसमिशन एंडेड. यू कैन सी दैट during the complete duration of this frame, no other station has transmitted anything. So this packet transmission is successful. Why? Because none of the other station had any overlapping transmission. ठीक है, अब आप देखो, A has started a frame transmission here. The frame was transmitted till this point. इतना टाइम लगा उसको उस फ्रेम को ट्रांसमिट करने में. But by the time it could complete the frame transmission, you can see that B has already started the transmission. और इतना part of B is overlapping with that of A. And B does not have carrier sensing, तो वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था कि एक और कुछ भेज रहा है. Is it? So it has blindly started the transmission of a frame. And you can see that some part of B's frame is overlapping with A's frame on the same medium. Shared medium, single channel. उसी पे ऐसे ओवरलैप हो रहे हैं. सो सम पार्ट ऑफ फ्रेम ए एंड सम पार्ट ऑफ फ्रेम बी हैज ओवरलैप एंड दोज पार्ट विल बी करप्टेड. ठीक है, सो यू कैन सी दैट इट इज शोन विद ग्रे कलर, इतना ग्रे कलर. एंड बाय द टाइम एंड बी कंटिन्यूज ट्रांसमिटिंग रेस्ट ऑफ द फ्रेम. बाय द टाइम डी भी ट्रांसमिट करता है तो ये डी का पैकेट भी करप्ट होगा, B का भी करप्ट होगा, A का भी करप्ट होगा. So you can see that effectively we could not transmit anything in this area. All the three packets are corrupted and all three needs retransmission. ठीक है. Similarly, थोड़ा आगे बढ़े तो E has transmitted something and it could see that nothing has overlap. C ने भेजा, उसमें भी overlap नहीं था. Then D has transmitted something, no overlap. Once again A ने भेजा, E ने भेजा, you can see that there is overlap. We call it as collision. ठीक है, दिस इज हाउ Aloha वर्क्स. होप फॉर द बेस्ट. दैट्स इट, दैट्स द algorithm. ठीक है.
continuous time assumption in the sense you can see that we did not have any kind of slot boundaries. यहाँ पर ये slot पे start होना चाहिए वैसा कुछ नहीं था. Any station can transmit at any point of time. That is why the time taken was continuous time. ठीक है? This is how Aloha works under continuous time. What are the chances of collision in Aloha? Look, this is very important. ये जो theory मैं अभी बताने जा रहा हूँ. It is extremely difficult to understand from book. If you try to read it 10 times, then also probably you may not understand. ठीक है? Collisions happen when other users transmit during vulnerable period that is twice the frame time. What is vulnerable period? And why it is twice the frame time? वो अभी मैं बताने जा रहा हूँ. Is it? Collision कब होता है? When some user transmits during the vulnerable period, which is double the frame time. Now, what exactly is frame time? Frame, here we are assuming that all the frames are of same size. Is it? For simplicity of the analysis, we are assuming that each and every frame is of same time, same size, and accordingly the time required to transmit the frame is also same. So we say that frame time is nothing but the time required to transmit one frame. Okay? Suppose this is some frame which is being transmitted, and this is the frame time of that frame. ठीक है? ये है यूजर A, ये है यूजर B. कंटिन्यूस टाइम असम्पशन है. ठीक है? प्योर अलोहा. वी आर इनटू प्योर अलोहा. कंटिन्यूस टाइम वाला जो अलोहा है उसको प्योर अलोहा बोलते हैं. हम स्लॉटेड टाइम असम्पशन वाला जो अलोहा है उसको हम लोग स्लॉटेड अलोहा बोलते हैं. ठीक है? सो राइट नाउ वी आर इनटू प्योर अलोहा. This is the frame time. Suppose frame number 1. This is the time required to transmit the frame. In order to ensure that this frame does not suffer from collision, or suppose ये वाला frame consider करते हैं हम लोग. This is some frame which is getting transferred by B, and this is the frame time. In order to ensure that this frame does not suffer from collision, what do you expect? When A should not transmit, like अगर A इसी स्लॉट पे स्टार्ट करता है, सपोज इस लाइन पे स्लॉट नहीं है, याद रखो ये लाइन बनाई है वो स्लॉट नहीं है, but this is some random time when B has started the transmission or B has transmitted a frame. We expect that A should not have transmitted a frame any time after this line. अगर इस लाइन पे स्टार्ट करता है, because this is frame time, तो उसका इस लाइन पे खत्म हो जाए. It will not overlap with that of B. But if the frame transmitted by A has started any time after this line, like suppose at this point, it is going to collide with B in this area. Yes or no? Do you all agree on this? Yes, sir. कि अगर Yes, sir. A ने इस लाइन के बाद कभी भी फ्रेम ट्रांसमिशन स्टार्ट किया तो वो इस फ्रेम के साथ जरा सा तो कोलाइड करेगा. अगर एक बिट का भी ओवरलैप हुआ इसका मतलब कोलिजन. ठीक है? पूरा कोलिजन हो या एक बिट ओवरलैप हो, देन आल्सो इट इज काउंटेड एज कोलिजन. सो वी एक्सपेक्ट दैट nobody should have transmitted anything in this interval, is it, during this interval. At the same time, do you expect that nobody should transmit anything within this time also, within this complete time? अगर कोई इसकी आखिरी बिट पे भी ट्रांसमिशन स्टार्ट करता है तो भी कोलिजन होगा. But somebody starts exactly on this line तो चलेगा, but any time before this line will not work, is it? So look at this window. What is it? This is the vulnerable period. So किसी एक फ्रेम को सक्सेसफुल होने के लिए 2 फ्रेम टाइम तक कोई भी ट्रांसमिशन नहीं करना चाहिए. यस और नो? कोई और स्टेशन 2 फ्रेम टाइम तक ट्रांसमिट ना करे, then only I can say that this frame will be successful. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. This is called as vulnerable period. The vulnerable period for pure Aloha is 2 times the frame time. कि 2 times the frame time तक कोई और ट्रांसमिट नहीं करना चाहिए. अगर किया तो it will result into collision. ठीक है? Is this clear सबको? क्योंकि इसके ऊपर Yes, से sir. आगे we are going to discuss some
प्रूफ, इसका एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करना, इट इज बेस्ड ऑन दिस कैलकुलेशन और बेस्ड ऑन दिस अंडरस्टैंडिंग. So this is the vulnerable period, is it? Vulnerable period, you can see that it is 2 times the frame time. ठीक है? Synchronizing senders to slot can reduce collision. यानी कि slot बना दो कि ये continuous time की जगह पर slot boundary decide कर दो और सारे स्टेशन को synchronize कर दो. सारे स्टेशन knows that this is slot boundary. This is where you can start the frame transmission. अगर आपने इसको मिस किया तो you cannot start here. You need to wait till the next slot. ठीक है? अगर ऐसा हुआ तो व्हाट इज द वनरेबल पीरियड? So we are talking about slotted aloha now. I could see that people have started leaving the meeting. I'm not yet done. I'm still teaching. Slotted aloha is the aloha where time is divided into slots. Suppose these are the slots. You can start a frame transmission on slot boundary. अगर आपने इस slot पे start करते हो तो आपका frame next slot की boundary पे खत्म हो जाएगा, surely. And some other station can start on this slot without resulting into collision with this frame. ठीक है? ऐसा होगा. In case of slotted arrow, what is the vulnerable period now? Only one slot. No other station should start in this slot. That's it. So your vulnerable window is only frame time or T. In case of slotted aloha. In case of pure aloha, it is 2T. ठीक है? इसकी इफेक्ट क्या होती है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. कोई डाउट है इन वनरेबल विंडो और वनरेबल पीरियड? प्योर aloha में white is 2T and slotted aloha में white is T. Yes. क्या है? You can ask questions. Hello. Any questions? No, sir. Clear. No, sir. Okay. Okay. No, sir. So I'll stop here and I'll continue with the efficiency of aloha. How to compute efficiency. So this we will see in the next lecture, which will be on Monday. ठीक है? So I don't know whether there were any questions on chat. Yeah, you can see that there are no questions on chat even. So I'll end the meeting. See you again on Monday. Okay, thank you all.